निर्माता। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा के वेरेम में आईएनएस मांडवी में नौसेना युद्ध कॉलेज भवन चोल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ साथ युद्ध की तैयारी भी हिंद प्रशांत क्षेत्र को खतरे के बिना शांति स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि देश नौसेना, वायुसेना और थल सेना में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं और पहलों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, शौचालय और संसद तथा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना शामिल है। बिहार के छपरा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि चाहे मुद्रा योजना हो या स्टैंड अप योजना, मोदी सरकार ने जनता को गिरवी मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 राज्यों में 201 सीएनजी केंद्रों का उद्घाटन किया। श्री पुरी ने कहा कि भारत विकास का समर्थन करने और बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नीतियों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर 4 नए मंत्रियों को शामिल किया। नए मंत्रियों में भाजपा के दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। न्यायालय ने विशेष जांच दल गठित करने के एकल पीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त करवाने के लिए जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज कोलकाता में कहा कि राज्य प्रशासन के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनका काम है। किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है। कमीशन इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू इंश्योर दैट वोटर्स एंजॉय द वोटिंग। इट्स ए फेस्टिवल। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज बेंगलुरु लश्कर-ए तैयबा जेल कट्टरपंथ मामले में 7 राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में की गई। इसमें कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार में लश्कर-ए तैयबा के एक आतंकवादी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से पंजाब के अमृतसर के लिए एक नई रेलगाड़ी शुरू की गई है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल के लाल कुआं से अमृतसर के लिए इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भट्ट ने कहा कि लंबे समय से सिख समाज लाल कुआं से अमृतसर के लिए ट्रेन की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सिख समाज के कई धार्मिक स्थल हैं और यहाँ से रेल यातायात की सुविधा मिलने से अमृतसर जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के बाद ट्रेन के संचालन में वृद्धि की जाएगी। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाए गए कई भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गूगल के प्रतिनिधियों और ऐप निर्माताओं के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दोनों पक्ष ऐप को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गूगल और स्टार्टअप कंपनियां आने वाले महीनों में इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को मजबूत करने पर जोर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने आज दक्षिण कोरिया में सियोल में राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण बातचीत के साथ साथ मजबूत व्यापारिक संपर्क और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA की लंबे समय से लंबित समीक्षा में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इसे उपयोगी बनाया जा सके। भारत और फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श का आज नई दिल्ली में आयोजन हुआ। विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांसीसी मंत्रालय की महासचिव एनी मैरी डेस्कॉट्स ने इसकी सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों पक्षों ने महत्वाकांक्षी भारत फ्रांस क्षितिज 2047 रोड मैप में दर्शाए गए द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। आयकर विभाग ने उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में असंगतियां पाई गई हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है कि ई सत्यापन योजना के अंतर्गत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। करदाताओं से ये अपील की गई है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत सहित नारी सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री की विभिन्न पहलों की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आकाशवाणी दिल्ली के विशेष कार्यक्रम साथी एक राह के में उन्होंने 2047 तक भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 195 अंक गिरकर 73,677 पर बंद हुआ। निफ्टी 49 अंक की गिरावट के साथ आज 22,356 अंक पर आ गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका ये परिणाम है कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। दोनों ने पहले दौर में मलेशिया के ओंग यू सिन और टीओ ई को हराया। महिला वर्ग में त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। दोनों ने अश्विनी पोनप्पा और तनिषा कैस्ट्रो को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री शामिल। कोलकाता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाए गए सभी भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला डबल्स जोड़ियां दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone and dedicates to the nation development projects worth around 20,000 crore rupees in Odisha. Uttar Pradesh cabinet expanded with induction of 4 new ministers. Kolkata High Court orders transfer of probe into attack on ED officials in Sandeshkhali to CBI. Google to restore all delisted Indian apps on its Play Store.
And in French Open badminton, Indian men and women's doubles pair cruise into second round in Paris. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation and laid the foundation stone of multiple development projects worth around 20,000 crore rupees at Chandikhol in Jajpur district of Odisha today. The projects relate to sectors of petroleum, natural gas, atomic energy, roadways, railways and connectivity. The Prime Minister reached Odisha this afternoon on a day-long visit to the state. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the projects unveiled today will boost industrial activities in the region and create new employment opportunities. आज यहाँ 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहाँ औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। Mr. Modi highlighted the government's approach of taking care of the present needs of the nation while working for the resolution of Viksit Bharat. He spoke about the government's efforts for enhancing the capabilities of the eastern states in the energy sector. ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। Earlier in the day, the Prime Minister launched development projects worth over 7,200 crore rupees in Telangana from Sangareddy. These projects encompass key sectors like road, rail, petroleum, aviation and natural gas. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has expanded his cabinet by inducting 4 new ministers. Governor Anandiben Patel administered the oath of office to BJP Sunil Sharma, Dara Singh Chauhan, Suhail Dev Bharatiya Samaj Party Chief Om Prakash Rajbhar and Rashtriya Lok Dal's Anil Kumar in a ceremony at Raj Bhavan this evening. Chief Minister Yogi Adityanath, Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brijesh Pathak and State BJP President Bhupendra Singh Chaudhary were present at the swearing-in ceremony. This is the first expansion of the UP cabinet in the second term of the Yogi government. The Calcutta High Court today ordered the transfer of the probe into the attack on ED officials in Shandeshkhali to the Central Bureau of Investigation (CBI). The division bench, headed by the Chief Justice, also ordered to hand over the custody of suspended Trinamool Congress leader Sheikh Shah Jahan to the CBI. The division bench also set aside the earlier order by the single bench to constitute a special investigation team for the case. However, the West Bengal government has moved the Supreme Court against the Calcutta High Court order. In a related development, the Enforcement Directorate has provisionally attached movable and immovable assets worth around 13 crore rupees in the ongoing investigations against Shah Jahan Sheikh and others. The ED initiated investigation on the basis of multiple FIRs registered by West Bengal Police against Shah Jahan Sheikh and others. Meanwhile, the BJP has welcomed the Calcutta High Court order to transfer the case to the CBI. Addressing the media in New Delhi, BJP spokesperson Shehzad Poonawala termed it as a victory of truth. The Election Commission has issued a set of directives to the district magistrates and district police chiefs of West Bengal to ensure impartial and violence-free polling in the forthcoming Lok Sabha elections in the state. Addressing a press conference in Kolkata, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar said the state administration has been instructed to ensure a level playing field for all political parties. We have given very, very strong instructions in no uncertain terms to the entire bureaucracy. Level playing field establish करना उनका काम है। किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है। Commission is absolutely determined to ensure that voters enjoy the voting. It's a festival. It's not an environment where you
you are fearful of exercising your right. Partisan attitude of the bureaucracy, senior, middle and lower, will not be tolerated. As per the directives issued by the Election Commission, adequate deployment of Central Armed Police Forces is to be done in all sensitive areas. In Telangana, the Bharat Rashtra Samiti and the Bahujan Samaj Party have decided to contest together in the upcoming Lok Sabha elections. BRS Chief K. Chandrasekhar Rao announced this in Hyderabad today. After a meeting with BSP Telangana Chief R.S. Praveen Kumar, the BRS has so far announced 4 candidates for the Lok Sabha elections. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said the government has empowered women by several initiatives and schemes. Addressing a credit outreach program in Chhapra in Bihar, the Union Minister said whether it is Mudra scheme or Stand-Up scheme, the Modi government has ensured collateral-free loans so that people can realize their dreams with the help of the government. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today inaugurated 201 CNG stations in 17 states through video conferencing. He also inaugurated India's first small-scale LNG unit of Gas Authority of India Limited (GAIL) at its Vijaypur LPG plant in Madhya Pradesh. Speaking on the occasion, Mr. Puri said India is committed to continuously improve the policy and regulatory environment to support development and make cleaner and sustainable fuel accessible and available to the public at large. He said these CNG stations spread across 52 geographical areas is a step closer towards achieving this vision. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle at AIR News Alerts. Technology giant Google has agreed to restore all the recently delisted Indian apps on its App Market Play Store. Talking to media in New Delhi, Information Technology Minister Ashwini Vaishnav informed this after a meeting with representatives from Google and the affected app developers. Mr. Vaishnav said both parties have agreed to reinstate the apps. Google and startup community both have met with us. We have had very constructive discussions, and finally Google has agreed to list all the apps as the way the status which was there on Friday morning, that status will be restored. Google has been supporting our technology development journey, and we believe that in the coming months both startup community as well as Google would be able to come to a long-term resolution. Recently, Google had delisted over 100 apps of prominent Indian tech companies. Union Defence Minister Rajnath Singh today witnessed the Indian Navy's ability to conduct twin carrier operations. The demonstration was held as part of the first edition of the Naval Commanders Conference, being held in hybrid form this time. During the inaugural session, both the aircraft carriers showcased their ability to safeguard India's maritime interests. Speaking on the occasion, Mr. Singh said the Navy is a reflection of India's growing stature on the global canvas. The Chief of Defence Staff, along with chiefs of the Indian Army and Indian Air Force, will also engage with the naval commanders over the next 2 days. In a separate event, the Defence Minister inaugurated the Naval War College building named Chola at INS Mandvi in Goa. Speaking on the occasion, Mr. Singh said the Indian Navy's capabilities in the Indian Ocean as well as the Pacific region are growing. He said the country is preparing to become self-reliant in the defence sector. Goa Chief Minister Pramod Sawant, Union Minister of State for Shipping Shripad Naik and naval officers were present on the occasion. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan has called for collaborative efforts amongst all stakeholders for a whole-of-nation approach in the defence production ecosystem. Addressing the concluding session of Impetus to Indigenization organised under the aegis of the Department of Military Affairs in New Delhi today, General Chauhan underscored the ongoing transformative process in defence reforms. He highlighted the need for collaborative efforts between the government, services and the defence production ecosystem to make the country self-reliant in defence manufacturing. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for intensifying the engagement between India and South Korea in different spheres. Addressing the Korea National Diplomatic Academy at Seoul today, the minister said the long-pending review of the Comprehensive Economic Partnership Agreement must be expedited and upgraded.
We need more political discussions, more strategic conversations. We need stronger business connects and technology interactions. The long pending review of our CEPA must be expedited so that it can be upgraded. Today, we are all contemplating the prospect of a re-globalization that would be very much shaped by emerging technologies. I am confident that by broadening our horizons, the India-ROK partnership can emerge as a significant factor in the Indo-Pacific. In Uttarakhand, a new train service commenced today from Lal Kuan in Nainital district to Amritsar in Punjab. This train will operate once a week. Union Minister of State for Defence Ajay Bhatt flagged off the train today. Speaking on the occasion, Mr. Bhatt emphasised that people travelling to Amritsar will benefit from the new facility. The National Commission for Women Chairperson Rekha Sharma today hailed Prime Minister Narendra Modi's initiatives aimed at promoting women's empowerment. Addressing Akashwani Delhi's special programme Sathi Ek Raah Ke ahead of the International Women's Day, she emphasised on the importance of socio-economic and political empowerment of women for India to achieve its developmental goals by 2047. Expressing concern over the prevailing atrocities against women embedded in societal structures, she called for a transformative shift in societal norms to empower women to make their own decisions. In French Open Badminton, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the second round of men's doubles, beating Malaysia's Ong Yu Sin and Teo Ee Hee in straight games. The world number one men's doubles pair beat the Malaysian pair in the round of 32 today. In women's doubles category, Teresa Jolly and Gayatri Gopichand beat compatriots Ashwini Ponnappa and Tanisha Crasto in a tough fight to cruise into the second round. The duo of Jolly and Gopichand emerged victorious by 16-19, 21-19, 21-17 in the opening match. PV Sindhu, Kidambi Srikanth and HS Pranoy will begin their singles challenge from tomorrow. In the second semi-final of Ranji Trophy, Madhya Pradesh need 93 runs to win against Vidarbh with 4 wickets in hand. At stumps on day 4, Madhya Pradesh were 228 for 6 in their second innings at Vidarbh Cricket Association ground in Nagpur. Earlier today, hosts were all out for 402 after they resumed their second innings at the overnight score of 343 for 6 this morning. In women's Premier League cricket, the match is underway between Mumbai Indians and hosts Delhi Capitals at Arun Jaitley Stadium in the national capital. Delhi Capitals have set a target of 193 runs. Earlier put into bat first, Delhi Capitals posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. The finals of the National Youth Parliament Festival 2024 began in the Central Hall of Parliament in New Delhi today. 87 state-level winners assembled in New Delhi for the finals in the Youth Parliament. Speaking at the inaugural function, Secretary Youth Affairs Meeta Rajiv Lochan said, India is a country which has always been led by youth, and the future of this country rests in young people. She also said the country's youth is at the forefront in all fields. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone and dedicates to the nation development projects worth around 20,000 crore rupees in Odisha. Uttar Pradesh Cabinet expanded with induction of 4 new ministers. Kolkata High Court orders transfer of probe into attack on ED officials in Sandesh Khali to CBI. Google to restore all delisted Indian apps on its Play Store. And in French Open Badminton, Indian men and women's doubles pairs cruise into second round in Paris. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.